Good afternoon, everyone. So, a simple task was told, okay, in which you need to create what an endless kind of game, okay, wherein with very few resources also we should be able to create or we should be able to run that game, okay. So one approach to that problem we will try to see over here, okay. There can be a number of ways in which you can create that game. One such approach is what I will quickly try to share. Now, you are always advised that whatever game object you do create, please do reset its position so that now you are able to see where exactly that particular game object is there in your screen. Okay. Now, few possible permutation combinations we will try. Along with that, we do also need to now switch and normal mode. So there are few things which were not told to you all. So those options are also there, which we will right now see. Okay. So very first thing, we need a plane. Right click, 3D object. I do create a plane. I reset it. I ensure it is at origin and I select the plane and I press F to ensure my screen is also at origin. Guys, I hope till here there is no problem. Okay, to till here एक plane बनाया है, this is understood. Now, next thing is when you do click on your camera, you should not see from the side, but you need to see from the top. तो अब वो कैसे करना? So for that very first, let us bring this person to origin. So camera को I did select 3 dots in the transform and now I do reset. Okay, so till here I don't think so there would be any problem. Till here everything is okay, understood. Now I just move this plane camera up and now you have to rotate this camera. Okay, it is your call how you wish to go. You can turn on the rotate tool or you can try by many means. One such good approach is by try rotating over here. So now please try to understand on which axis do you want to rotate. How many axes are there on which we can rotate? 3. X axis, Y axis, Z axis. And which is the axis on which if you rotate there is no meaning in rotating over there? Y. So here Y क्या about if you do rotate there is no meaning. So it is either you do rotate it on Z axis or you do rotate it on X axis. Okay. So say main camera is selected, everything is there. I rotate by 90 on X and now you can see I am able to see or the camera is facing down. Okay. Now you just have to move it up. Okay. And there will be a time where you would not be able to see things properly or boundary. So very first I am trying to set the camera. Okay. Right now there is an arbitrary value over here of 4.87. I want to confirm so that when I do click on play mode, I should be able to see things properly. So in order to do this trial and error, what do? I switch to the play mode. Okay, I am there in the play mode. My main camera is selected. Very first thing what I want to check right now is when I am there, when the camera is seeing from the top, its edges should not be cut. Okay, so you can see the y coordinate is there over here. ये दिख रहे हैं यहाँ पर y coordinate. I try to play with the y coordinate. So y को I am decreasing. If I decrease, so you can see it is zooming in. If you do increase the value, it is going out. So what I meant, right now you can see there will be a value after which you will see the side border. दिख रहा है now you are what are you seeing right now over here? Can you see the border over here? So we do not want to see this. We want the plane to be complete. So right now 9.43 value is there. If I decrease, it is going proper. So say around 8.5 ke upar the camera is looking properly. So right now I am setting it to 8.5. This first thing is understood, guys. Okay, you can see no matter how you do try to resize, it is not showing white in that particular border. Okay, till here any problem?
I am right now in play mode. As soon as I stop, everything what I have done will reset. In order to save everything, I click on the three dots. I copy the component, or you can copy the world transformation over here. Okay, I stop. Since you did stop, everything is reset. Again, click over here, click on paste and paste on world transform. ये बात आई समझ में? क्या किया, प्ले मोड में वो कंपोनेंट के ऑल थिंग्स, पोजीशन एक्स वाई जेड, रोटेशन एक्स वाई जेड, स्केल एक्स वाई जेड, तीनों को हमने कॉपी कर लिया, स्टॉप किया, देन मेन कैमरा पे गए, और देन फ्रॉम हियर वी डिड पेस्ट द एंटायर कंपोनेंट. जो भी प्रॉपर्टीज उधर थी वो क्या की हमने यहाँ पर पेस्ट कर दी. राइट नाउ आई क्रिएट अ मटेरियल. ओके, mat_plane blue. Okay, and I am creating that blue material which we wanted. I am again increasing the metallic part, and ये material इसको दे दिया. I go back to the play mode. So far so good. यहाँ तक आगे समझ में? Now whenever you are clicking on play, you can see things in the top. Things are proper. Now one border over here is proper. इधर अभी भी ब्लू नहीं हुआ है. whom are you going to change? प्लेन को चेंज करना है या कैमरा को चेंज करना है? कैमरा को चेंज करने की जरूरत नहीं है. whom do you need to change now? You need to scale whom? You need to scale your plane. So in play mode itself, I click the plane, and here there are properties. Okay, right now scale का ऑप्शन है. just try to see if I play with x क्या होता है. I am trying to play with x. x बराबर है. Okay, x is the only value, right? Then if you do play with y, okay, and usually y के साथ we never play with the plane because it is the depth. Plane is an 2D entity. And if you do play with z, okay, देखो z को कम कर रहा हूँ. Can you see z in which direction? This direction. This is z axis. This axis is who? This is x axis. So right now I make this thing go back to 111, or in play mode itself I reset. So I do know scale में I have to change what? I have to increase the z component. So z component को I slightly try increasing. You need to go to a point wherein you can no longer see this shape, this color over here. So 2.1 आ गया, 2.12. So around 2.2 के ऊपर, और it is good के around 2.3. Is this thing clear, guys? So scale के ये components हैं. I again 3 dots, copy world component, stop. Do you see your plane? How is it? Whether it is rectangular or whether it is square? It is square as of now. So select the plane, 3 dots, paste world component. Did it turn rectangular? I hope you are able to understand what I did tell, what I have done. नहीं समझा? Undo कर दिया. प्लेन दिख रहा है कैसे है? प्ले मोड में चला गया. Right now where am I? I am in play mode. This you had already set, right? ये ऊपर का तो आपने कैमरे का डेप्थ से सेट कर दिया था. Now what do you have? You can scale either on x or you can scale either on z. I try scaling on z. So if you do increase the scale, you will find कि एक टाइम ऐसा आता है कि it completely fills 2.25 या 2.3. So I was doing this trial and error in the play mode. Hence 3 dot copy and world component. I hope this thing is understood. I stop, everything reset. It is as good as playing over here. आप लोग इधर प्ले कर रहे हो ना, इधर नहीं करके हमने क्या किया, कैमरा ऑन करके we did check. So there, वहां पर what all values you got? 3 dot, paste and world component. Done? Do you want me to repeat again? वापस repeat करूं? Guys, done? Okay, now try to understand the scale of plane. प्लेन का स्केल कितना है अभी? एक साइड में इट इज 2.3, एक साइड में इट इज 1. 1 by 2.3 का क्या है? आपका पूरा प्लेन है. नाउ
In between this, how to add that black strip now? वो क्वेश्चन है. क्यूब या 2D चाहिए तो अगेन राइट क्लिक, 3D ऑब्जेक्ट, प्लेन. ओके, पर्पसली इसको डुप्लीकेट करके यू ऐड अ मटेरियल. ओके, ब्लैक मटेरियल. एंड इसको आपने क्या किया, ब्लैक मटेरियल ऐड कर दिया. गाइस, इज दिस थिंग क्लियर? वेयर इज दिस प्लेन? Whenever you do create a new object, it gets created center of the screen, so it is not at origin. So I 3 dots reset कर दिया, ये origin पे आ गया. Let us click on plane, try to see it from the top view. Okay, right now what are you seeing? Plane is completely overridden by blue. तो plane को अगर थोड़ा सा ऊपर लाना है, you can select in y position 0.01 value you can give. Okay, थोड़ा सा plane क्या हो गया आपका ऊपर. Do you see the plane now? Am I in play mode? Okay, now can I vary the dimensions? Getting it or not getting it? 3 things: translate, scale and rotate. Should I rotate? No. Should I translate to change the dimensions? No. Translate will change the position. हमको क्या change करना है उसका? Dimension. तो dimension के लिए what do we have to play with? We have to play with the scale part. I am there in play mode. Okay, I click on the plane. Now here second plane के again dimensions you have to change. तो सबसे पहले in z axis it is completely 1, उसको कम करना होगा. Okay, so here this is the value of scale. I am there in play mode. 1, 3 चीजों में if you want to divide, 1 divided by 3 it will be 1/3 0.333. so let us try with 0.3. I hope ये बात आ रही है समझ में. If you still want it to be larger, you can also use 0.4 or 0.33 is, yeah, 0.35 is again the proper value. Is this thing clear? Now in x, can you see it is very short in x? Whom do you have to copy? x में कितना होना चाहिए? बड़ा वाला प्लेन, उसको कितना रखा था आपने? 2.3. तो इधर x के अंदर you do know नंबर 2.3 है, डायरेक्टली 2.3 टाइप कर दो, ये देखो प्रॉपर हो. गेटिंग इट? क्या है प्रॉब्लम? एज सुन एज यू स्टॉप क्या होगा? रीसेट हो जाएगा. तो बचने के लिए क्लिक ऑन द प्लेन, 3 डॉट्स, कॉपी एंटायर वर्ल्ड कंपोनेंट, स्टॉप. जैसे स्टॉप करोगे, आपने बताया था ना, वो रीसेट हो जाएगा. गेटिंग इट? रीसेट हो गया. सिंस यू डू हैव द पॉइंट्स, सिलेक्ट 3 डॉट एंड पेस्ट द वर्ल्ड कंपोनेंट. बन गया. Done this thing. Now one issue is still there over here. Okay, your plane is at a higher level than the previous plane. 0.01 आपने थोड़ा सा उसको ऊपर रखा हुआ है, राइट? तो अब अगर स्विच करोगे तो हो सकता है वो क्या है, उधर आके जंप करे. ओके, तो इन ऑर्डर टू रिमूव द जंप क्या कर सकते हैं? ऐसा कौन है जो कोलिजन एनेबल करता है? इसका कोलाइडर. तो इसका कोलाइडर इफ यू वांट यू कैन टर्न ऑफ. Getting this thing? So right now whatever game object will be there, it is not going to interfere. Scene ready? Okay, why are you seeing this thing in light blue color and over here dark color? Metallic है, और second आपका जो directional light है, it is inclined. So guys, till here any problem? इतना आ रहा है समझ में? Okay, did we write a single line of code till now over here? नहीं. Okay, done. So now let us add the first thing over here. So the first thing what we have to add is player. Okay, I assume कुछ मालूम नहीं अभी किधर जाएगा, क्या जाएगा, कुछ भी नहीं पता. I assume zoom out करके आपका प्लेन और किधर है. You need not to worry. Right click, 3D object, I create a cube. I rename this thing to be GO game object underscore player. Okay,
दिस इज वाई आई एम टेलिंग, जो भी है ट्राई करो क्रिएटिंग इट फ्रॉम ओरिजिन. हाउ विल यू सेंड दिस पर्सन बैक टू ओरिजिन? Reset. Three dots, reset, press F. You will now be able to see the entire scene. Is the scene ready, guys? Now, please see over here. I go to the play mode. Okay? Play mode के अंदर दिख रहा है, बहुत छोटा सा दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट. How can you increase its size? Scale. Please enable, so select the object. Please enable uniform scaling over here. ओके, बिकॉज हमको क्यूब क्यूब ही दिखना चाहिए. एंड ट्राई इंक्रीजिंग द स्केल 1. ये एक वैल्यू ऐसी आएगी भी, समझो 1.98, और आई अज्यूम 2 टू बी द प्रॉपर स्केल. गाइस, गेटिंग दिस थिंग? गेटिंग दिस थिंग और नॉट गेटिंग दिस थिंग? इसको स्टॉप कर दिया है, जो भी था वो रिसेट हो गया, कॉपी नहीं हुआ था. आई पर्पसली डिडंट कॉपी, सो आई गो ओवर हियर, यूनिफॉर्म स्केलिंग ऑन किया, स्केल कर दिया 2. Now the problem is 2 दिया, so how much is it above the plane and how much is it below the plane? 1 above and 1 below. इसको ऊपर कैसे लेके जाएं? पोजीशन. तो y के अंदर now give value 1. Till here any problem? I go back to play. Okay, आगे अभी game object. In this orientation, where should this player start from? Can you please help me with this? In this position, where should the player start from? It should have started from this point over here, right? So now, yahan par, what is the point? That is what we are interested in. I am right now in play mode. I can do as much as changes I want. Okay. In order to do that, go player ko I select. I do play with its position. X को मैं ट्राई करता हूं नेगेटिव और पॉजिटिव देने की, नॉट स्केल पोजीशन. तो इसको अगर मैं नेगेटिव लेके जा रहा हूं, इज इट मूविंग बैक? इसको आप पॉजिटिव लेके जा रहे हो, इज इट मूविंग फ्रंट? गाइस, गेटिंग दिस थिंग? ओके, नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम इज विद द ओरिएंटेशन ऑफ योर कैमरा. सो इफ यू डू सी, एक टाइम ऐसा आता है कि वो स्लैंट में, ओके, when it is at the center, you are just seeing the top face, but as soon as you go beyond the center, you are also seeing its side face over here. So the reason for this is, in your camera as of now, the setting of projection is to be perspective. There are two options. Either you can have your isometric perspective view on, or you can turn this on to be orthographic. So what change I did do? Camera का position I did change from perspective to orthographic. Let us quickly try to play. Play के अंदर did it make any change? कुछ change हुआ क्या? Change कब दिखेगा? When you select the player and now if you move. Are you seeing the slant edges? Guys, is it understood? Are you seeing the slant edges? No. Now, please again help me in understanding what is the maximum extreme limit, okay, to which I can move the game object. Here, can you see the value? What is the value as of now? It is minus around 9.05. और आगे लेके जाओगे तो ये प्लेन से क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा. 10 के ऊपर भी you can see वो बॉर्डर जैसा ही कुछ दिख रहा है. Okay, so I assume my working position over here to be from minus 10 to plus 10 over here. You can also have the value minus 9 to plus 9. Minus 9, it is okay. Is this thing clear, guys? Okay, range क्या है हमारा? minus 9 से plus 9. I hope यहाँ तक पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. कैमरा के लिए बेटा पहले से यू आर हैविंग अ कैमरा या कैमरा ऐड करना है? कैमरा इज देयर, रोटेट कर लिया था आपने. आर दीज थिंग्स प्रॉपर इन योर कैमरा? कैमरा का y वैल्यू, रोटेशन अलोंग x, ये दोनों 0, ये भी 0, ये भी 0, स्केल में 1 1 1 1 है.
हाँ ये प्रॉपर है। इसके बाद इधर प्रोजेक्शन का ऑप्शन है, इसमें पर्सपेक्टिव होगा, ड्रॉप डाउन करो, देन यू विल हैव ऑर्थोग्राफिक बटन ओवर हियर ऑप्शन इन द लिस्ट, सेकंड ऑप्शन वुड बी ऑर्थोग्राफिक। चलो गाइस, डन दिस मच? Okay, till here I don't think so there is any problem, right? Can we proceed? Now, how do I ensure कि गेम स्टार्ट होने पे ही ये लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे आए? क्या करके रख सकते हैं उधर? What can we do? ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन यूज कर सकते हो, वेरी राइट। व्हाट एल्स? What else? So right now I create an empty game object. Let the empty object select sit at origin. empty game object कहां बैठा हुआ है? origin पे। ये empty game object को I just rename it to be EGO empty game object underscore game controller। ओके, empty game object है, कहां बैठा हुआ है ये? origin पे। empty game object के अंदर I create one more empty game object and इसको I give name position A, duplicate position B without any space, control D position C। I hope these things are understood. Okay, मैंने empty game object बनाया origin पे, इस एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट के अंदर तीन एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट्स बनाए, पोजीशन ए, पोजीशन बी एंड पोजीशन सी। बाय डिफॉल्ट राइट नाउ एवरीथिंग इज एट ओरिजिन। गाइस, अंडरस्टूड दिस थिंग और नॉट? नाउ पर्पसली आई गो बैक ओवर हियर टू प्ले मोड। क्यूब कहां बैठा हुआ है अभी? ओरिजिन पे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? Now I now try to find those three positions. What do I want? एक पोजीशन में इधर बनाऊंगा, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। Now इसका आपको you need 2 points, x coordinate and y coordinate. Are you aware about the x coordinate? -9 for all three। x coordinate is what? -9। इसका y coordinate क्या होगा बीच वाले का? -9, 0। ऊपर वाले का -9 कॉमा सम वैल्यू, राइट? सो फॉर दैट आई एम देयर इन प्ले मोड, आई डू ट्राई टू मूव इट इन द z वैल्यू। ओके, तो ये z में यू कैन सी नेगेटिव में, सॉरी आई डिड क्लिक ऑन पोजीशन, आई वांट टू मूव द प्लेयर, आई एम मूविंग द पोजीशन। सो इन -z, कैन यू सी इन माइनस इट इज गोइंग डाउन एंड इन प्लस इट इज गोइंग अप। जीरो के ऊपर वो किधर है? वो सेंटर में है। So positive में there is something called as 3.4 या 3.5 or else 3.4 seems to be proper. Getting this thing or not getting this thing? Okay, I stop. Position A, okay, जो है for position A I move it to -9, 0 and 3.4. Getting it or not getting it? ऊपर कितना लेके जाना है? हाउ मच अप डू यू वांट टू मूव दिस? क्यूब कितने का था? 2। ऊपर कितना लेके जाना होगा इसको? 1। गाइस, गेटिंग दिस थिंग? कैन यू सी ओवर हियर, एक कोई तो भी एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट आ गया। अब मेरे केस में ये ओरिएंटेशन उल्टा था, लेफ्ट क्लिक दबा के आई डू चेंज द ओरिएंटेशन इन सीन ओवर हियर। आई होप नाउ दिस मेक्स मोर सेंस। गाइस, अंडरस्टूड दिस थिंग और नॉट? तीन पोजीशंस बना के रखे हैं। एक पोजीशन को यू गिव नंबर व्हाट? -9, 1, 3.4। उसके नीचे यू वांट वन मोर, तो उसको आएगा -9, 1, 0। एंड थर्ड वाले को -9, 1 एंड -3.4। I select 1, 2 and 3। ओके, तो ये तीनों गेम ऑब्जेक्ट्स मतलब
ये देखो पोजीशन 1, कैन यू सी द पोजीशन ओवर हियर? पोजीशन बी दिख रहा है, पोजीशन सी दिख रहा है यहाँ पे. Guys, getting this thing or not getting this thing? What have we created? We have created 3 positions. Position A, position B and position C. Coordinates I hope you all are aware. X minus 1, Y में तीनों को Y is 1, X का तीनों is minus 9. Z value changes. एक के लिए सबसे ऊपर वाले के लिए Z है positive 3.4, बीच वाले के लिए Z value है 0 and सबसे नीचे वाले के लिए Z value है minus 3.4. I hope till here there is no problem. Okay. I duplicate material. Material मैं बना देता हूँ material for player and let this person be green in color. ये material assign कर दिया game player को. Okay. ये जो game player object है इसको मैंने यहाँ लाके prefab बना दिया. From my game I do delete the game player. Game player क्या कर दिया हमने? Delete कर दिया. Do you still have the game player? Yes, you do still have the game player as what? As a prefab over here. I hope guys this thing is clear. Till here what is done? Understood? Now, please help me in doing this. As soon as the game starts, player should directly go to position B. ये कैसे करना होगा यहाँ? As soon as the game starts, the player should move to position B. Right now, neither the player is there nor nothing is there. अभी तो कुछ भी नहीं है. स्क्रिप्ट अटैच करना होगा उसके लिए. Getting it to game controller के ऊपर empty game object controller. I add a script scr underscore game controller in camel case. Okay, I have created a new script. Now, in order to create something over here, what is the function that you are going to use, guys? Instantiate. Instantiate needs how many things? Instantiate को कितनी चीजें चाहिए? 3 चीजें चाहिए instantiate को. किसको instantiate करना, कहाँ करना और कैसे करना? Out of these 3 things, the person whom you want to instantiate, it should be a prefab. Have you created that prefab? Now, script किसको attach किया आपने? Game controller को. Game controller किधर है? Origin पे. Do you want to add the game object at origin? जिसको script attach उसी के transform पे add करना है या कहीं और add करना है? You want to add it somewhere else, right? So in order to add it somewhere else, you need to take its position also. So in this script, very first thing is let us get those 3 positions because आगे चल के हम लोग key input भी देंगे. So here where public is there, मैं serialized field नहीं कर रहा हूँ. I use public transform. Okay. Here also tc underscore position A. Okay. Public transform B और फिर से क्या है हमारा public transform C. Guys, is this thing clear? In hierarchy, I have named these people to be pose A, pose B, pose C. In my script, I am naming them to be TC pose A, TC pose B, TC pose C. I purposely am abbreviating TC because these are transform components. These are not the game object. I hope you do understand between the two. Difference between the two, I hope you do know. Okay. So here now, if you do save, if you do go back, you will find your game controller is asking you for 3 more components. Whom are you going to give over here? यहाँ पर क्या दोगे आप यहाँ पर? वो जो 3 पोज, तो पोज है ड्रैग एंड ड्रॉप किया पोज ए पे, पोज बी कर दिया पोज बी एंड पोज सी कर दिया पोज सी.
So does your script now has access to these three things? Getting it or not getting it? You now need one more thing over here. क्या बोला गया था? In order to instantiate, we need what? We need game object. Game object should be a prefab. I hit enter, public, serialize field कर दो या public कर दो, public game object. ओके, जियो अंडरस्कोर क्या नाम दिया हमने यहां पर, उसको नाम दिया. Guys, is this thing clear? Now, one fact I would like to state over here: if you instantiate something, okay, it does gets created with a new name. Its original name is kept as it is. Okay, तो यहाँ पर जो है, you are going to add whom, you are going to give the prefab over here. Do you see one more entry over here, game object? Okay, तो here ये जो prefab था, ये prefab drag and drop कर दिया. Now here void start में what do we have to write guys? जैसे ही गेम स्टार्ट हो, कौन दिखना चाहिए आपको? प्लेयर. क्या है फंक्शन? इंस्टेंशिएट, राइट? इंस्टेंशिएट गेम ऑब्जेक्ट. कौन है गेम ऑब्जेक्ट? जियो अंडरस्कोर प्लेयर, कॉमा क्या लिखा था हमने यहां पर? ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, कॉमा क्वाटर्नियन डॉट identity. Do you remember this thing? Do you remember this thing guys? Now इसको सेव किया. If you do go back, object will be created, but where will it be created? Where will it be created? In instantiate second argument. Okay, whose position did you tell? तो ये जो आपका गेम कंट्रोलर है उसके पास वो ऑब्जेक्ट आएगा. ट्राई क्लिकिंग ऑन प्ले, यू विल फाइंड कि गेम ऑब्जेक्ट किधर आया, इधर आया. आपको गेम ऑब्जेक्ट कहां पे चाहिए था? क्या नाम है उसका? इट इज पोजीशन बी, राइट? हैव यू टेकन रेफरेंस ऑफ दिस पोजीशन बी ओवर हियर? पोजीशन बी इज अ ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट और इज इट अ गेम ऑब्जेक्ट? It is a transform component. So instead of transform over here, you can write tc underscore position p. I hope this thing is understood. I save, I go back, and now if I do try to click on play, you will find that the game object is where? Game object is at the start. I stop, I again show you the game. Do you have a player over here guys? No. Do you have player over here? No. But as soon as you play, you are instantiating the player. I hope this thing is understood over here. Now, can you help me in destroying this person after 2 seconds, 3 seconds? कैसे करोगे destroy? ऑन कोलिजन एंटर के अंदर डिस्ट्रॉय डाल दिया, या इधर हाउ विल यू डिस्ट्रॉय? से 2 सेकंड के बाद आपको डिस्ट्रॉय करना है तो इधर क्रिएट हुआ, या तो इसको पूरे को डिस्ट्रॉय के अंदर डाल दो. यहां पर यू कैन, वो इंस्टेंशिएटेड है. व्हाट आई वांट टू शो, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल. वेरी फर्स्ट थिंग, इफ यू डू क्लिक ऑन प्ले, ट्राई टू सी द नेम ऑफ द गेम ऑब्जेक्ट. क्या नेम ऑब्जेक्ट आया है? क्या लिखा है उसने आगे? क्लोन. ओके, तो इधर इफ यू डू, दिस इज नॉट कि हमको हर बार डिस्ट्रॉय करना है. दिस इज जस्ट I want to let you know that here it is a copy of your prefab. Here if you use destroy game object, किसको destroy करना है हमने? go player को. ओके, go player को अगर आप destroy करने का ट्राई करो, purposely इसको 2 सेकंड दे दो. If you do try to see over here, you will have an error. It is not going to work. Why? What is it trying to tell? ये देख लो. Okay, because the problem over here is your go player is, it usually does not exist. आपका जो यहाँ created है वो क्या है? go player का एक clone. So here create a private game object and इसको हम लोग बोलेंगे game object underscore
रियल प्लेयर। गेटिंग इट और नॉट गेटिंग इट? इसको क्या नाम दिया हमने? रियल प्लेयर। और इधर वी विल राइट, here we will write game object underscore real player is equals to what? ये जो ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट हुआ ना, इसको हमने किसके अंदर सेव कर लिया? रियल प्लेयर में। इज इट पब्लिक? नो, योर रियल प्लेयर इज नॉट पब्लिक, वो प्राइवेट है। इधर किसको डिस्ट्रॉय करना है फिर आपने? go underscore real player. This will get destroyed after 2 seconds. I hope guys this thing is understood. So if you do try to click on play, you will find कि ऑब्जेक्ट आ गया, but after 2 seconds क्या हो गया? वो चला गया। I hope मेरी बात आ रही है समझ में? Getting it or not getting it, the difference? Okay, so this is it where we are going to stop right now. Post lunch we will try to explore this further. ये जो script है SCR game controller, I am sharing with you in the same link. Okay, वो तीन I hope you all have created. Okay, so the script is shared on the same link. You all can refer.